Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well and you are preparing pretty well for different examination as well as some people are applying for different biotechnology project. I always wonder that what can be asked in the interview, what will the panelist ask about your previous experience, about what do you know and what do you expect from that institute. So all those questions I have compiled in this video, so this will be a very beneficial video for all of you who are appearing in a biotechnology project based interview. So do watch it, and if you like my efforts you can hit the like button and do subscribe my channel for more such videos. So there are so many questions which can be asked by your panelists if you are appearing in a project related to any branch of biotechnology. So we will work out all those questions and the probable answer that you can answer to your panelist. So the first question is, can you briefly describe your background and experience in biotechnology? So if you are applying for a particular post, let's say a project assistant or a project JRF or a project scientist, so they will ask you that do you have any prior experience, यानी आपके प्रायर एक्सपीरियंस की वहाँ पे बात करी जाएगी. And as per your prior experience you have to tell that what you have learned from that experience, and you have to tell that what are the different project with which you are associated with and what are the outcomes, have any practical applicability out of that project you have did in your past. So they will answer, so accordingly you can answer that yes, I have a background in biotechnology with a focus on whatever niche you are working in or whatever domain you are working in. So you can let the panelists know that you are involved in this domain. Suppose if you are involved in any industrial biotech project or if you are involved in some medical microbiology or whatever, so you have to mention that niche, that under this niche I worked and I have this project under this, and out of that you have to tell your experience, and in that you have to answer that at what extent you have worked in this niche, यानी कि आपने कितने प्रोजेक्ट्स किए हैं. एंड अलग अलग आपको वर्सेटाइल, अगर आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट किए हैं, लेट सपोज कि अगर आपने मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में कोई प्रोजेक्ट किया है एंड उसमें बहुत सारे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आपने किए हैं, सपोज कोई ड्रग डिस्कवरी हो गया है किसी एक पैथोजन के अगेंस्ट में. Suppose if you have developed any drug for a particular pathogen, then there must be so many phases like preclinical trial, clinical trial. तो आप वो सब बता सकते हैं कि in this project I have also gone up till the preclinical or clinical trial or whatever be the progress. So you need to mention all those things in front of your panelists that out of my experience I have expertise in this. तो आपको इस तरह से अपना आंसर देना होगा. जितने भी पिछले प्रोजेक्ट्स हैं उन सब का कंक्लूसिव पॉइंट आपको अपने पैनलिस्ट के सामने रखना होगा, एंड वो ब्रॉड किस जोन में जा रहे हैं एंड स्पेसिफिकली क्या क्या थे वो आपको हमेशा बताना होगा. सबसे पहले यू हैव टू मेंशन दी ब्रॉड फील्ड जिसमें आप काम करते हैं, आफ्टर दैट दो मल्टीपल प्रोजेक्ट उसके अंदर आ रहे हैं स्पेसिफिक, वो आपको बताना है. Now moving on to the next question. So the next question is, what motivated you to pursue this particular project in the biotechnology? So ये जो क्वेश्चन है वो दो तरीके से पूछा जा सकता है. If you are discussing your own project, own previous project with the panelists, speaking about your own previous project, then they will ask you that what motivated you to join that group, that research group or that project. So you need to mention that you have some interest. Firstly you have to answer on the basis of your interest, that you have interest in medical microbiology, you like to solve the real world problem, like the pathogen is responsible for so many outbreaks, so you want to develop some drugs so that it can be prevented in future. So likewise you have to relate, or if you are associated with creating any kind of cost effective method for synthesis of any bioproduct, that also you can tell that I am associated with this group because I want to develop a sustainable or a cost effective method for whatever purpose you are creating a product. So you can mention that कि मुझे cost effectiveness, sustainability and you like to solve a problem which is related to the common people का जो problem होता है उससे related है, इसीलिए मेरा interest इसमें है. एंड इससे मैं खुद को रिलेट इसलिए भी कर पा रहा हूँ क्योंकि उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी है. तो इस तरह से आप आंसर कर सकते हैं दैट दिस हैज सो मेनी प्रैक्टिकल आउटकम्स. अगर आप कोई टेक्निक डेवलप कर रहे हैं तो उससे ह्यूमन वेलफेयर को फायदा कैसे हो सकता है एंड वो कैसे ग्रीन है, सस्टेनेबल है, क्लीन है, कैसे आपको ये सारी चीज़ों को रिलेट करके ह्यूमन वेलफेयर का प्रैक्टिकलिटी देख के आपको आंसर देना होगा. एंड सेकेंड थिंग, अगर वो आप अपने
प्रीवियस प्रोजेक्ट का नहीं बोल रहे हैं और इस प्रोजेक्ट के लिए वो बात कर रहे हैं कि आप जिस भी प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं या अपियर हुए हैं वो उसमें क्यों मोटिवेटेड है। तो उसके लिए भी सेम यही लॉजिक है कि वो प्रोजेक्ट जिस भी टॉपिक आपको उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी जोड़ना होगा। किससे जोड़ना होगा? आपको जोड़ना होगा जो भी ह्यूमन वेलफेयर है उससे। सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, how do you stay updated with the latest trends and advancement in biotechnology? So they are indirectly asking you that whether you are active in attending different conferences all over the globe, you are meeting with different researchers, sharing knowledge and interacting with different peer groups. So they are asking this. So you can say कि for I just go through different scientific journals. So you can say that I attend different biotech conferences and also participate in some online courses to keep up the advancement. So आपको बताना है कि आप कितने conferences आप attend करते हैं, कितने webinars, ये सब में आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन है। यू नीड टू मेंशन दैट। एंड इनफैक्ट अगर आपने रिसेंटली कुछ अटेंड किया है तो आप उसको भी मेंशन कर सकते हैं। आप हमेशा माइंड में एक आध अपने जो भी साइंटिफिक कॉन्फ्रेंसेज हैं उनके बारे में एक माइंड में रख लीजिए कि हाँ आपने लेटेस्ट क्या अटेंड किया है, चाहे वो ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो किसी भी मोड में हो। सो यू कैन डिस्कस दैट। तो इससे क्या होगा, इससे पैनलिस्ट को लगेगा कि यू आर एक्टिव, आपको चीज़ें याद हैं, आपने अभी रिसेंट अटेंड किया है तो आप अभी अपडेटेड भी हैं। तो ये सारी चीजें आपको उनसे कहना होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, can you explain your biotechnology project in simple terms? So this is a very important question. If a PhD is applying for a particular project, they will be asked that explain your thesis in 2 to 3 sentences. This is a very common question asked to all of the people appearing for any interview. So for PhDs, they ask that explain your thesis in just 1 to 3 lines, or else they can ask that what are your findings, let us know in only 2 to 3 sentences. So you have to just give the concluding points that out of your thesis, out of your hypothesis, what you have drawn from your whole thesis, and through that what is its applicability, is its future prospect. So you need to mention all those things and in a very simple language, because everybody will not understand your research because it is your research, not their research. So you need to mention it in very simple words that if you are associated with this, these, that. For example, if you are associated with developing a virus free plant, so what are the different ways through which previously it was done, and was your approach for that, and how is it different from the previous literatures and previous researcher, and what is its benefit, what is its pros and cons, and how you will benefit the future agriculturists from that. You can relate all these points together because every research has its pros and cons. So you need to mention that कि मेरे research का ये limitation है, shortcoming है. Don't hide your the shortcomings of your research thinking that this will create a negative impact. No, every research has some kind of foundation, some kind of restriction, because it has time constraint, it has funding constraints, so many different kind of factors play a role in that. So you need to mention all those things ki up till my thesis I have done this and I am focusing on this factor on the shortcomings in my later on research work. So you can accordingly discuss all these facts in a very simple language, and always try to find 2 to 3 lines of your whole project work you have done previously. If you have worked somewhere, try to have some crisp summary of your whole project that I have worked on this, I perform this technique, and after that I got this finding which has this application for the normal society. The next question, what laboratory technique are you proficient in? For example, PCR, CRISPR, ELISA, Western blot, etc. For answering this question, you can relate your previous experience that I have expertise in molecular like PCR, Western blot, ELISA, CRISPR, and gene cloning, protein purification technique. So you need to mention that in my previous project I used this technique, so I have expertise on this. I have expertise on different chromatographic techniques, different protein based technique. So you need to clearly mention that out of all the experience you have, so you have this much of hands on in this technique, in that technique. Basically you need to mention all the molecular based techniques, and particularly you need to mention that you are proficient in gene cloning, PCR, or different Western blot, and also the protein purification technique, the downstream technique responsible for the whole extraction to purification of any particular product like enzyme.
सो आपको ये सारी चीज़ें प्रॉपरली मेंशन करनी होगी कि कितने कितने टेक्निक्स में आपकी प्रोफिशिएंसी है, आपके टेक्निकल स्किल्स की यहाँ पे बात करी जा रही है। एंड अपार्ट फ्रॉम द टेक्निकल स्किल्स यू हैव टू रिलेट कि आपने उन्हें किन किन प्रोजेक्ट में यूज किया है प्रीवियसली। सो वो एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होगी कि आपने अपने प्रोजेक्ट में ये इंस्ट्रूमेंट हैंडल किए हैं। सो यू आर फेमिलियर विद, वेदर यू आर फेमिलियर विद अ फर्मेंटेशन टेक्निक, अ फर्मेंटर, or any other kind of machine or instrument, so you can mention that. It will aid on your marks in the interview. So the next question is, how does bioinformatics play a role in modern biotechnology research? So as you all know, nowadays so many openings are there related to the bioinformatics, computational biology, AI tools and techniques. So there are a lot of opportunities for the people who are involved in doing research related to bioinformatics or computational biology. So previously we go into the wet lab to find out what can be done for the experiment. Some data will come and we analyze that data, and out of that we draw the conclusion. But nowadays, before going into the wet lab, we go into the dry lab or the in silico study. So the potential of in silico study is that it will minimize your expenditure onto your money, your efforts, your hard work. So it will just cut off whole of that, because it has the potential. There are so many web server, there are so many tools, there are so many applications of different bioinformatics tool developed by the bioinformaticians. You can use that for your own research benefit. Before the wet lab you can try that, and after getting a hit you can individually try that into your wet lab. So you don't have to do hundred of experiment in your wet lab. No, you, by using computational biology, you can just go into your different set of experiment run, and out of the major hit you can try only that hit, that this is a potential hit, I can try this in my lab and whether it is working or not. So for any such thing we need bioinformatics. For primer designing, for analyzing gene sequence, for analyzing 16s rRNA sequencing or 18s rRNA sequencing. So for any such work we need bioinformatics. For analyzing our data, for analyzing our, so for everything, for a health and drug discovery we use, for any if you want to fetch the genome sequence or the particular gene sequence of a particular microorganism or a gene or a any organism, whole genome, so we can just go into the bioinformatics, because it has so many databases related to the different kind of gene, like protein sequence you can get, RNA sequence you can get, DNA sequence you can get, and more than that. And after that you can align, you can see whether it has homology or not. So many things you can do in the bioinformatics. So you can mention that कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स का यूज आपने प्रीवियसली किया है या नहीं किया है। अगर आपने अब तक नहीं किया है, सो यू शुड ऑलवेज डू इट। एंड आप ये भी बता सकते हैं कि आपने प्रीवियसली बहुत सारे कोर्सेज किए हैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स से रिलेटेड। आई विल ऑल्सो रिकमेंड कि डू सम कोर्स इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स, लाइक हाउ टू डू द होल genome sequencing, data analysis, next generation sequencing, and all those things you need to do it, because इससे पता चलता है कि आप कितने अपडेट हैं। जो भी मॉडर्न टूल्स हैं जो बायोटेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एडवांस करते हैं, उससे आप एसोसिएटेड है। तो यू नीड टू मेंशन दैट इन योर interview. So next question, how can your project findings be applied in the real world? So you need to mention the applications of your project. So mention that you need to mention the key finding of your research कि मेरे research का ये finding है, and उसका practical approach क्या है, and उसका practicability क्या है, normal human being के लिए क्या फायदा है। Because research in my terms, in my way, I just prefer to let us the panelists know that what is the purpose of my research, why I am doing it, why is it important, and what are the applications of my research. Whatever I have done, whatever I have invested 4 to 5 years, so it has this much of application for the normal human being. So if you are able to explain like this way, no one can just say no to you for the job. बिकॉज हम 4 से 5 या 5 से 7 साल किसी चीज के लिए दे रहे हैं फॉर अ PhD, देन ऑब्वियसली आपकी कुछ फाइंडिंग्स होगी, और वो फाइंडिंग्स अगर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के काम का नहीं है तो वो किसी भी मतलब का नहीं है। सो ऑब्वियसली उस स्टेज में अगर वो नहीं है एप्लीकेशन, तो यू कैन से दैट कि जितना भी आपने काम किया है अप टू दिस स्टेज, दिस कैन गिव, सो यू कैन से कि अप टिल दिस स्टेज दिस
findings can give an insight to other people who are associated in this field. They can use this finding for further research. आप इस तरह से रिलेट कर सकते हैं. अगर डायरेक्टली आपके काम का एप्लीकेशन नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए, नॉर्मल सोसाइटी के लिए नहीं है, सो यू कैन से दैट कि मैंने जितने एक्सटेंड तक रिसर्च किया है उसको लेके अगर आगे हम काम करें, सो प्रोबेबली इसके एप्लीकेशंस हमें फ्यूचर में देखने को मिल सकते हैं. तो इस तरह से आपको कम्युनिकेट करना है, बिकॉज एवरी रिसर्च हैज सम सॉर्ट ऑफ प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी. एप्लीकेशंस हमेशा होते हैं, वी नीड टू फाइंड दैट ओनली. ऑब्वियसली बहुत रिसर्च लगता है कि हम ग्राउंड लेवल पे उसको अप्लाई करने के लिए, बट यू कैन ट्राई टू फाइंड इट आउट कि आपके प्रोजेक्ट का ये एप्लीकेशन हो सकता है. Question: What are your thoughts on the ethical implications of genetic modification? So basically इसमें आपको पूछा जा रहा है GEAC के बारे में, या फिर अलग अलग जो regulations है related to some GMOs, genetically modified organism and genetically modified food. So जो genetic engineering approval committee है, they always face so many ethical issues that people are still unaware that if they will consume some GMO, they will have some kind of infection, some kind of allergy. So we need to have some ethical implications that whether we can do this or not. So you can answer this कि अगर आप जेनेटिक मॉडिफिकेशन किसी चीज में कर रहे हैं, सपोज इफ यू आर मॉडिफाइंग अ पर्टिकुलर बैक्टीरिया, a wild type bacteria is modified through genetic engineering to have some genes that is responsible for the plastic degradation. I am taking an example. So that is responsible for plastic degradation. So you are doing it for a very good purpose, that this bacteria in its wild type it is not able to degrade a particular gene, but if that particular plastic degradation gene is inserted in this wild type bacteria through genetic engineering techniques, through recombinant DNA technologies, so that bacteria will be able to clean or to degrade plastic, which is a very potential pollutant in our environment. So what it will do, so it will have some sort of applications as per the environmental perspective. So for that reason, we need the genetic modification, which has a great potential in the medicine, agriculture, environmental technology, but ethical concerns like unintended mutation and environmental risk must be addressed. So you need to mention that you are doing it with a particular strain or a particular gene that will not harm in any way if it is left exposed into the environment. So आप जो भी चीजें कर रहे हैं, obviously हम कुछ बोल नहीं सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर जस्ट ट्रांसफॉर्म्ड whenever they are just left in the environment as it is. So there must be some genes which can be mutated and it may have some lethal outcomes, lethal consequences associated with it. So you need to mention that this bacteria or whatever you are doing the genetic modification, this is for your purpose and it will not harm in any way to the environment. So you need to convince them. If you are developing any genetically modified food, so it will not harm, it will not be allergic in any ways, that you need so many clinical trials for that, for proving that. So there must be some regulations and responsible research to ensure the safe application. You need to have good practices, good laboratory practices, that you are not releasing that bacteria or whatever be the experimental effluent, you are not releasing it directly into the environment so that it may pose threat to the humans or any other organism as well. So you need to have such kind of thing in your mind that आप कभी भी कुछ डेवलप कर रहे हैं तो उसके जितने भी सेफ लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस जो होते हैं, जो बायो सेफ्टी हैजर्ड होता है, उसको हम कैसे मैनेज करते हैं, यू नीड टू मेंशन दैट. विल कंसीडर ईच एंड एवरी फैक्टर दैट अगर आप ये कर रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट ह्यूमन बीइंग या अदर ऑर्गेनिजम्स पे क्या हो सकता है. तो इस तरह से आपको रिलेट करके ये आंसर देना होगा. Now the next question is, have you worked in a team during your project? So basically collaborations की बात हो रही है यहाँ पे. क्या आप collaborative work आपने कभी किया है? क्या आपने कभी टीम के साथ में काम किया है? किसी प्रोजेक्ट पे क्या आपने ग्रुप टास्क किया है? So you can say that yes, I have previously collaborated, like somebody did the experiment, somebody did the data analysis and somebody have wrote the manuscript. So likewise you can answer yes, I have collaborated with so many other researchers. Like in what way you have collaborated? Like you have developed
a whole, you have conceptualized a whole project, आपने पूरा project को conceptualize किया, and somebody did the experiment, somebody did the data analysis after the experiments are done, and you wrote the, or somebody else wrote the manuscript, and you all have finalized the final version of the manuscript. So basically you need to answer that yes, you are involved with working in a team, you can, you have that potential that you can work in a team with synergy. So you need to answer that, that yes, I have done it in my previous projects and I would love to work in a team, because this will just increase your potential, and a collaborative research has so many potential in the. So you can also say that yes, I am interested in collaborative work, because a collaborative research is a very good research, and the level of its finding and the potential of its finding is just commendable. So you can answer that way also. The next question, how do you manage time effectively while conducting experiments? So for this, you can answer this way, that you can run multiple experiments at a time. For example, if for experiment 1, if for experiment 1 your incubation is 12 hours, or let's say 24 hours, or let's say 6 hours. So you will not wait for 6 hours without doing anything productive. So instead of that, you, what you can do, you can plan your next experiment in that time. If the incubation is 12 hour, if the incubation is 24 hour, you have so much time, so you can say that I am used to do multiple experiments at a time to preserve, to save the time, so that it can be done before the deadline. So you have to mention all those things कि आप multiple काम एक साथ कर सकते हैं. Like if you are doing the experiment part and during the incubation time you have written your मैन्युस्क्रिप्ट, आप उस टाइम पे लिख सकते हैं, या फिर आप जो आपका प्रीवियस जितना भी आपने काम कर चुका है, आप उसका डेटा एनालिसिस करके प्रॉपर उसके इन्फरेंस ड्रॉ करके आप उसको प्रॉपरली पेपर क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, आप उस टाइम पे लिटरेचर सर्च करते हैं, या अपने काम को और भी क्या कर सकते हैं, फर्दर प्लानिंग आप करते हैं. तो यू नीड टू हैव सम सारे स्ट्रेटेजी बताने होंगे कि आप अपना टाइम कैसे मैनेज करते हैं, राइटिंग टास्क एंड एक्सपेरिमेंट टास्क दोनों को कैसे लेके चलते हैं. सो यू कैन मेंशन दैट कि आप बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स साइमल्टेनियसली करते हैं या फिर पैरेलली करते हैं. एंड उसके अलावा आप ये बोल सकते हैं कि उस टाइम में जो इन द मीन टाइम आई ऑल्सो गो थ्रू सो मेनी लिटरेचर दैट विल have so much of knowledge related to my field, that latest research technique that are employed by different researchers, what they are doing. And I also go through different research platforms to know that what are the things going on in my field. तो आपको इस तरह से relate करके सारे answers को देना है. Now next question, if given more resources, how would you improve or expand your project? So ये जो आंसर है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज वो आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि अगर आपको सारे रिसोर्सेज दिया जाए, फॉर एग्जांपल अगर आपको प्रॉपर फंडिंग दिया जा रहा है, एंड आपके पास एक अच्छी टीम है, you have everything to do, so what you can do to improve or to expand your project currently going on, so what you can say. So अगर आपके पास में फंडिंग इश्यूज नहीं है, if you don't have any funding constraints, so what you can do, you can just elaborate your study up to a very large extent. फॉर एग्जाम्पल आप अगर कोई ड्रग डिस्कवरी कर रहे हो, कोई ड्रग बना रहे हो, सो यू कैन गो इन टू द प्री क्लिनिकल ट्रायल विच इज अ कॉस्टली वन, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस प्री क्लिनिकल एंड इवन आप क्लिनिकल ट्रायल में जा सकते हो, एंड आप पूरी तरह से उसका कैरेक्टराइजेशन पे जा सकते हो, उसकी आइडेंटिफिकेशन पे जा सकते हो, बिकॉज फॉर आइडेंटिफिकेशन सो मच ऑफ मनी इज रिक्वायर्ड. सो यू कैन से कि अगर मुझे फंडिंग मिलती है, एक टीम मिलती है, सो वी कैन जस्ट डू अ लॉट ऑफ थिंग्स. लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ड्रग की ही केस की बात करूँ, तो आपने सपोज एक फाइटोथेराप्यूटिक्स डेवलप किया है, फाइटोथेराप्यूटिक्स मीन प्लांट बेस्ड ड्रग्स फॉर अ पर्टिकुलर डिजीज, तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, उस फाइटोथेराप्यूटिक्स को, उस ड्रग को पूरी तरह से आइडेंटिफाई करके, एंड आफ्टर द आइडेंटिफिकेशन यू कैन जस्ट गिव द फॉर्मुलेशन कि किस फॉर्म में वो ज़्यादा इफेक्टिव है, एंड आप उस पर जितना ट्रायल है, क्लिनिकल ट्रायल, प्री क्लिनिकल ट्रायल, वो सब करने के बाद में मार्केट में रिलीज करने से पहले जो भी आपको लेवल्स क्रॉस करने होते हैं ट्रायल के, क्लिनिकल ट्रायल के, वो सब आप कर सकते हैं. एंड आप प्रॉपर, अगर आपके टीम में कोई एक बायो इन्फॉर्मेटिशियन है, तो आप उसमें डॉकिंग स्टडी करके आप बहुत सारी चीज़ें और भी कर सकते हो. उसका आप मॉडलिंग एनालिसिस कर सकते हो कि ये ड्रग जो है वो यहाँ यहाँ बाइंड कर सकता है प्रोबेबली, वो डॉकिंग स्टडी से आपको पता चल जाएगा. तो आपके टीम में अलग अलग अगर मेंबर होंगे, तो आप ये बोल सकते हो इट विल टेक लेस टाइम,
बहुत कम टाइम लेगा वो प्रोजेक्ट, अगर बहुत सारे प्रोडक्टिव लोग हैं आपके टीम में, सो इट विल टेक लेस टाइम एंड इट विल बी मोर इम्पैक्टफुल। क्योंकि अगर अगर एक से ज्यादा माइंड एक साथ कोलैबोरेटिव वर्क कर रहा है, सो एवरीबडी हैज डिफरेंट थिंकिंग, एवरीबडी हैज एक्सपर्टीज इन डिफरेंट डोमेन्स, सो आउट ऑफ दैट यू कैन डू अ वेरी कोलैबोरेटिव, अ वेरी गुड वर्क, कि सबके एक्सपर्टीज का यूज करके आप कुछ बहुत अच्छा लेके आ सकते हैं। जैसे इसमें कोई क्लिनिकल ट्रायल में इन्वॉल्व है, कोई बायोइन्फॉर्मेटिक्स स्टडी कर रहा है, कोई उसके फॉर्मुलेशन में रिस्पॉन्सिबल है कि वो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल क्या है, कौन सा मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल है उस डिजीज को क्योर करने में। सो टू कैरेक्टराइज दैट एक पर्सन इन्वॉल्व है, उसके जो भी फॉर्मुलेशंस बना रहा है उसके लिए एक पर्सन बना रहा है। सो आप ये बोल सकते हैं कि अगर एक कोलैबोरेटिव वर्क हम करेंगे तो इट विल बी वेरी impactful and it will take less time and it will be more advanced at the same time. So you can answer this way. So I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, do hit the like button because this will motivate me to make so many videos as well. So अगर आपकी कुछ और क्वेरीज है या कुछ और सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं, आई विल बी हैप्पी टू आंसर। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।